हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश लर्निंग अकेडमी। दिस वीडियो इज़ वेरी स्पेशल क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग है रेज्यूमे राइटिंग वर्कशॉप की, जो कि मैंने कंडक्ट किया था फ्रेशर्स के लिए। इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको सुनकर बहुत ही नॉर्मल लगेगी, पर इसकी वजह से स्टूडेंट्स को कंपनी में सिलेक्शन के बाद भी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। तो क्या वो चीजें हैं जो आपको रिज्यूमे में लिखनी है, नहीं लिखनी है, और कुछ सीक्रेट टिप्स जो आपको पता चलेगा इस वीडियो में। पूरा वीडियो जरूर देखें, स्किप करने की कोशिश ना करें क्योंकि हो सकता है कुछ वैल्यूबल आपसे छूट जाए। Want any one of you, Shruti, I want you to go ahead and read this slide for all of us. Yes, ma'am. The purpose of the resume's main purpose is to get you an interview. It is often the first item a potential employer sees about you and therefore is very important. A resume is a short descriptive account of your work experience, education, qualifications, achievements, and special skills. In addition, a resume may be requested by a scholarship committee or be part of your admissions application for graduate or professional school. Thank you so much, Shruti, for reading out for us. Now, all of you, we will not give a very, a lot of time to know what is the purpose of the resume. You all know that a perfect resume will help you to land your dream job. Kaise? Now, your question would be, ma'am, whether we have a good resume or not, but if we are good in our technicals, if we have a very good knowledge about domain skills, then can't you guarantee us a perfect job? That is very true. You can get a job perfectly, but sometimes if you will be applying off campus, then the resume would be the first thing which will be noticed by the recruiter. Do you all agree to this or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So many a times first impression is the last impression, and your resume would be the one which will showcase whether you are a perfect fit for that particular job or not. Now, one more thing I would like to add up here is the last column of here that says that it could be requested by a scholarship committee or a part of the admission application, or graduate or professional school. Most of you might be going for a job. Okay, many of you might be thinking or planning to do your MS or higher studies or a PG degree. So if you are aspiring to be a part of any of the renowned institute or university, or if you are willing to go abroad for your MS, most of the time you have to add your resume for the referral. So that way, resume is not only important to get a job, but it will be important in various other aspects as well, whether you will be applying for higher education, whether you are applying for a scholarship, or maybe some other reasons as well. Is this slide clear, everyone? There is not much to explain about it. Yes, ma'am. Now, Yes, let ma'am. us come to the point. Now, why would you create a resume? First thing we have already discussed, to get a dream job. Second thing is, for an example, let us look this resume in a broader aspect. Here, resume doesn't mean only online resume or the resume which we create on the A4 size paper, but let us think about the LinkedIn profile. Okay, you all have your LinkedIn account. I hope you all have. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, how many of you have a GitHub profile created, updated? HackerRank? Yes, ma'am. Okay, well, I am so glad that most of you know about all those things. So a resume will help you to form a network. If you talk about resume in a broader aspect, let us talk about LinkedIn. LinkedIn is also a kind of the electronic resume, because on LinkedIn also you update only those skills which you mention in your hard copy or soft copy. Am I correct? Yes. Proforma is same. You upload Yes, your ma'am. achievements. Yes, ma'am. Okay. So on a broader aspect, this is the thing. Now, to be coupled with a dynamic online presence, particularly if we talk about the largest networking site, professional site, which is LinkedIn, your resume will give a very good impression. In today's workshop, we will be talking about the resume which you
create to get a dream job, but do understand each and everything and apply your common sense. Okay, now let us move ahead. How many of you know that there are various types of resume? It is visible on the screen as well, but can anybody let me know? Apart from the things which are visible, do you know about more of the things? Can anybody read out this slide from me? Anyone from batch CS1? CS1 student, any one of you, go ahead and read this for me, the best resume format. Am I audible, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, let me go through the slide. Okay, fine. So there are 3 or 4 types of resume format. We have not discussed about this format earlier in detail. Neither we are going to discuss about those formats today. But so that you all know that there are various kind of formats, this resume writing session will help you in upcoming time as well. When you will be passed out from this college, when you will not have Somi ma'am, Kitur ma'am or Pratibha ma'am, that time also you should have a fair idea कि अब पास होने के बाद हम कैसा resume बनाएंगे. So now let us go ahead. There is a reverse chronological resume. This is the resume which you all have to create, and I will be guiding you that what reverse chronological resume is all about. Apart from that, there are 2 more resume formats. Those are functional and combination. So functional resume is a skill based resume. Okay, for an example, if there is anybody from mechanical or civil, CCAD और अलग अलग आप लोग डिजाइनिंग टूल्स के बारे में पढ़ते हो. Okay, I'm talking to civil engineers now, जिन्होंने ये ज्वाइन किया है सेशन. अगर आप कुछ ऐसे एरिया में काम करना चाहते हो, फॉर एन एग्जांपल आप मैकेनिकल ब्रांच के हो बट टरबाइन सेक्टर अलग है, अगर आपको मोटर्स में कहीं काम करना है, टाटा मोटर्स व्हीकल इंडस्ट्री में, देन एवरीथिंग इज डिफरेंट. जब आप कुछ ऐसा टारगेटेड रिज्यूमे बनाओगे विच विल बी बेस्ड ऑन योर स्किल्स, then that resume is known as a functional resume where you will highlight your skills rather than highlighting about your projects, internships or your education. वहां पर skill will be the prime priority. Combination resume is a format where you combine both the features of a chronological and a functional resume. इतना ही अभी समझना important है. Let us talk to the point. You all will create a reverse chronological resume. What do you understand by this? Somi ma'am and I have already shared this in your previous sessions. Is there anybody who can reply and let me know what do you understand by reverse chronological resume? Jayant? Reverse. Yes, ma'am. Yes. Am I audible? Yes, you are. Reverse chronological order means, ma'am, the latest thing what we are doing right now. Excellent. You have to mention Jayant. that. Excellent. And then so on the past one. Right. Very true. So you all being a fresher because you are doing your graduation, that too you are doing your BTech, BE, your resume will be in the reverse chronological. That means your 10th, 12th will not be highlighted now. Rather than that, you will be highlighting your graduation because the companies which will come to recruit you will be looking for bachelor's degree, not a one who has passed his 10th or 12th. Am I clear on this part? Everybody understand now what is a reverse chronological resume? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great. Should we move to the next slide? Yes, ma'am. Okay. So whenever there is a doubt, don't leave it out. Just ask us or just keep all your queries so that at the end of the session, we can sort it out. Let us move ahead. Mechanical civil wale bachche bhi, please pay attention. I have created many slides for you as well. Okay, I will give you an idea कि आप लोग क्या लिखेंगे objective में या whatever things we will talk about. Now, resume sections, you all are very well aware about these sections. हमने काफी हंसी मजाक में भी इन sections को अपने class में discuss किया था. If you remember, when we talked, we don't talk about our marital status. मैंने आपको बोला था कोई आपको यहाँ पर शादी ब्याह के लिए नहीं आ रहा है कि आपको लिखना है कि आप शादीशुदा हैं, कि आप single हैं, ready to mingle हैं. Do you all remember this? Examples we quoted? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now we will talk about because अब तुम लोग भी बड़े हो गए ना, एक कदम आगे आ गए हो 7th semester में, we will just talk to the point. Now, there are few things which should be there on your resume.
format can change, your presentation of resume can change. You might feel अरे मेरा resume एकदम अलग दिखना चाहिए, तो आप बहुत सारा वो एकदम decorative resume also you may use if you wish. But the thing which I am discussing, which are visible on this slide, ये चीजें होना ही होना है आपके resume में. You don't have to leave any of this section. Otherwise, your resume will be completely incomplete. Okay. Now, personal info. What do you mean by personal info? We can see personal info twice. So what is the first personal info? Who will tell me? Jitendra or anybody? Yes, ma'am. Yeah, Ma'am, go ahead, like, Muskan. मैम सबसे Your पहले name नेम आएगा and Exactly. then mobile number Right, very true. and then So your LinkedIn personal ID. info, yes, very true, very good. So first you will talk about your name, then it will be followed by your contact number, which will be in +91 format. Email ID should look very professional, followed by your LinkedIn ID. LinkedIn ID is optional. If you are sharing your resume online, then yes, URL is visible. If you are sharing it offline in a hard copy, you may remove that section. So there are few things which are common sense based. तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे. Now, those who have created or have something to showcase on their GitHub profile, don't forget to mention it. Do provide the link of your GitHub, do provide the link of your LinkedIn profile, and do provide the link whatever you have scored in your hacker rank. Now, one thing which I would like to make clear to all of you is, when you have you all know about the settings of all those things na, LinkedIn ka bhi, GitHub ka bhi. With the time when you are sharing your profiles with companies, make sure कि visibility उसका public हो. अभी कुछ चीजें चल रही हैं, मुझे बाकी प्लेसमेंट ऑफिसर से पता चलता है अलग अलग कॉलेजेस के, कि बच्चों ने अपनी प्रोफाइल की जो विजिबिलिटी है उसको प्राइवेट करके रखी है. आप लोग जब जॉब की तलाश में निकलेंगे, दैट टाइम योर प्रोफाइल शुड बी विजिबली publicly. ठीक है, it should be visible publicly. Am I clear on this front, everyone? Yes, ma'am. Because most of the times when you are providing the URL of GitHub or anything, then when the recruiter would like to check it, he can't see it because it is set on the mode which is not visible for public. So do make this, do note this point. Now, third is let us move to the second one, objective. I have already shared with all of you कि objective these days are optional. अगर आपके पास अच्छा खासा objective तैयार है, अगर आपको clarity है कि आपको जावा डेवलपर बनना है, कि आपको AI में जाना है, कि आपको पाइथन पे काम करना है, अगर बिल्कुल क्लैरिटी है, उस दिन के लिए यू कैन मेंशन योर ऑब्जेक्टिव. बट इफ देयर इज समथिंग कि यार जो भी मिलेगा, जिस भी प्रोफाइल पे टीसीएस हायर करने आएगी, गूगल हायर करने आएगी, हम चले जाएंगे, अगर उनको फ्रेशर्स की सिर्फ रिक्वायरमेंट है, उस केस में यू कैन अवॉइड राइटिंग ऑब्जेक्टिव. Okay, the time you have a fair idea that why you are applying for that particular company or position, then only you should mention your objective. Am I clear on this point, everyone? Yes, ma'am. Great. Now let us talk about the third point, which is summary of qualification. What do you understand by this? Summary of qualification matlab your bachelor's, 12th, 10th. If there are any student who have done their diploma or something extra, you can go ahead and mention that as well. Okay, so summary of qualification and education is the same thing. I have written it differently so that you all know that qualification, education will go hand in hand. Let us talk about a very important point, which is 5th and 6th, technical skills, projects, trainings, internships, certifications, followed by webinars, seminars, etc., etc. For you all, whether you are from mechanical, civil, CSIT or EC, for all of you, it is very important to highlight your domain knowledge and your technical skills. So अगर अभी तक आपके resume में ये जो section है वो तगड़ा नहीं है, then I doubt that you are ready to compete with others who are in the market. Okay, so technical skills, projects, trainings, ये एकदम तगड़ी होनी चाहिए, ये वाला column. जो भी टेक्निकल स्किल्स आप उस दिन एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर फॉर एन एग्जांपल टीसीएस है या मैंगो आईटी सॉल्यूशन आई है या फिर कोई अदर कंपनीज आई है, टेक्निकल स्किल्स को आपको हमेशा उस कंपनी के प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन को देखकर टेक्निकल स्किल मेंटेन करनी है.
Am I clear on this part, everyone? Yes, ma'am. Ma'am, I have one doubt. Yes, please go ahead. Is it necessary to have internship certificates to get the job? No, Or it is not. It is could not. It is it- not necessary at all. For an example, if somebody has an internship or certification from Udemy or various other sites, but they don't know anything about it, then there is no use of internship or certification. Most of the times, no companies are going through your folder these days. जैसे हम folder बना के ले जाते थे ना वो फाइल, आजकल कोई उसके पन्ने पलटता तक नहीं है. मैक्सिमम टाइम नहीं पलटते हैं वो आपके फोल्डर्स को. So that time, whether you have done your projects, minor, major, or any trainings or internships, you should be thorough about the knowledge which you have gained from those skills or those things. Okay, so doing an internship is not important, but if all the other students have mentioned that they have done their internship, and if that section is blank in your resume, then a question might arise कि why you have not done internship. तो उसकी जगह आपने जो और भी चीजें की है, सर्टिफिकेशन की हैं, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हो. Am I clear on this part, everyone? Yes, ma'am. Okay, now let us move to the very important part, which is awards and activities. Awards and activities का मतलब यहाँ पर है certifications से भी है, आपको क्या certificate मिले हैं, आपने क्या awards जीते हैं, and that should be always aligned to the job profile you are applying for. For an example, if you are applying for Java developer or if you are applying for coding profile, something like that, तो वहां पर अगर कोडिंगो में कोई अवार्ड जीता है, या मान लो गीक फॉर गीक्स की तरफ से कुछ हुआ था, या टीसीएस का कोई ऐसा चैलेंज हुआ था कोडिंग कंपटीशन को लेकर, तो दोज अवार्ड्स एंड एक्टिविटीज शुड बी मेंशन्ड और हाईलाइटेड. इट विल गिव यू एन एज ओवर अदर कैंडिडेट्स. एम आई क्लियर ऑन दिस पार्ट, एवरीवन? Yes, ma'am. थोड़ा जल्दी जल्दी मैं इसलिए बोलूंगी बिकॉज इट इज ओनली 1.5 ड्यूरेशन सेशन एंड वी हैव अ लॉट टू डिस्कस. ओके, नाउ पर्सनल एट्रीब्यूट्स मतलब स्ट्रेंथ. यहाँ पर अगेन जितनी भी चीजें रेज्यूमे में होंगी, जो भी सेक्शन में बता रही हूँ, ये होंगे ही होंगे आपके रेज्यूमे में, पर इसके अलावा भी एडिशनली इफ यू वुड लाइक टू ऐड फ्यू थिंग्स, इट विल बी एडेड डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल. ओके, नाउ पर्सनल एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या? The strength, the skills you possess as an individual. Here we are talking about your soft skill. For an example, if you are very good in your communication skill, interpersonal skill, if you have your goal set, if you are flexible, adaptable, time management skills, disciplined, leadership qualities, all those things will go into this section, which is personal attribute. पर यहाँ पर भी आपको 3-4 से ज्यादा personal attributes या strength mention नहीं करनी चाहिए. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सारे गुणों की खान आप हो, क्योंकि आपका जो रेज्यूमे बनेगा वो 1 पेज का ही बनेगा. तो बहुत ही क्रिस्प एंड कंसाइज तरीके से आप लोगों को अपने रेज्यूमे में चीजों को मेंशन करना है. नाउ 9th इज अगेन पर्सनल इन्फो. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? यहाँ पे पर्सनल इन्फो का मतलब क्या है? कैन एनीबॉडी टेल मी? Father's name, date of birth, family, about the family. About family, Okay. ma'am. Okay, now हम लोगों ने भी जब तुम लोगों का अभी प्रीवियस सेशन लिया था, वी टोल्ड यू दैट व्हाट थिंग्स विल कम इन पर्सनल इन्फो. दैट वाज योर डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, लैंग्वेजेस नोन, योर परमानेंट एंड टेम्पररी एड्रेस. बट seeing today's trend, there are many resumes which I have checked these days, and I have came to a conclusion that many a times if you wish, you can remove your parents' name as well from your resume. It should be only about you, so you can mention your date of birth, languages known, address or nationality. Apart from this, you can just omit this section where you mention about your parents' name, but this is optional. If you wish, you can go with your parents' name like mother's name and father's name. But अगर ऐसा लग रहा है कि एक पेज से रेज्यूमे बड़ा हो रहा है और उस सेक्शन को हटा देने से अगर रेज्यूमे में सारी इन्फो फिट हो रही है, so you can go ahead and remove it. Am I clear on this part, everyone? Yes, I will ma'am. show you few of the samples also. Now let us move to the self declaration part. Everybody know what is the self declaration, right? Yes, ma'am. यहाँ पर बच्चा अगर गूगल पे चेक करने जाओगे या अलग अलग फॉर्मेट देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि बहुत लोग उसमें लिखते हैं क्या चीजें, रेफरेंसेस.
ओके, दे राइट रेफरेंसेस इज इंपॉर्टेंट। रेफरेंस जब मांगा जाए तब सेल्फ डिक्लेरेशन का कॉलम रेफरेंस बन जाता है। ये ज्यादातर एक्सपीरियंस लोगों के लिए होता है। जब फॉर एन एग्जांपल इफ प्रतिभा इज अप्लाइंग समवेयर फॉर द पोजीशन ऑफ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, मैं भले ही अपने रेफरेंसेस में यहाँ के डायरेक्टर या जिनको मैं जानती हूँ उनका नाम मेंशन कर सकती हूँ, बट फॉर ऑल ऑफ यू बीइंग अ फ्रेशर, इफ दैट इज योर फर्स्ट जॉब, you should always go with the self declaration rather than going for references. Am I clear on this part? Yes, ma'am. है ना? और जब कैंपस प्लेसमेंट है तब तो तुम्हारे प्लेसमेंट ऑफिसर्स हैं ही वहां पर, आपके डायरेक्टर्स हैं ही, बिकॉज आपका कॉलेज की तरफ से प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर रेफरेंसेस की जरूरत नहीं होती। पर कई बार अलग से अगर कंपनी की तरफ से ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि यू हैव टू मेंशन द रेफरेंस, जैसे कई सारे कंपनीज में होता है ऐसा, तो आप चाहें तो किसी का भी नाम मेंशन कर सकते हैं। यू कैन गो विद योर टीपीओ, यू कैन गो विद योर ट्रेनर, जो लगता है कि अवेलेबल होंगे, यू कैन मेंशन देयर कॉन्टैक्ट नंबर एंड डेजिग्नेशन इन रेफरेंस। यहाँ तक एकदम क्लियर है एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Should we move ahead to the next slide? Yes, ma'am. Last point once again. Yeah, bacha. Yeah. Please Hello. ask. Ma'am, Please am I ask. audible? Yes, you are. Ma'am, can you explain the last point once again? Actually, my internet was unstable. Definitely, I'll repeat it for you. I was telling that for freshers, self declaration is mandatory. जहाँ पर हम लिखते हैं I hereby declare that the above mentioned knowledge or information is true to my knowledge and belief. But most of the times it may be a case, जैसे तुम लोग अगर Google या अलग अलग जगह पर resume template download करोगे तो तुमको difference दिखेगा। तुमको लगेगा अरे हमारे trainers ने self declaration बोला है और इस रिज्यूमे में तो रेफरेंसेस मेंशन किया गया है। तो ये ऑप्शनल होता है, इट डिपेंड्स। अगर आपको कंपनी ने रेफरेंस मांगा है तो आप यहाँ पर एक और सेक्शन ऐड करेंगे विच इज रेफरेंसेस, जहां पर आप मेंशन करेंगे जो भी डेजिग्नेशन। मान लो टीपीओ सर का डेजिग्नेशन, आपको पता है कि टीपीओ है, मोहम्मद आलम सर है, टीपीओ है और बंसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के साथ काम करते हैं, तो आपको रेफरेंस में उनका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और डेजिग्नेशन देना रहेगा। पर आप लोगों के लिए, बिकॉज दिस विल बी योर फर्स्ट जॉब, यू ऑल आर फ्रेशर, फॉर यू डोंट हैव टू मेंशन अबाउट द रेफरेंसेस, you just have to write self declaration in your resume. Am I clear on this part, everyone? Yes, ma'am. Thank you very much, ma'am. Ma'am, Manusmriti, you raised your hand. Yes, bacha, ask. ma'am, For a non-technical company, what all changes I have to do? Yeah, I'll go through it. First, we will just discuss about the pattern which will be applicable for all these students, CSIT, MEC. After that, I will come to the specific domains. Okay, all of you? ma'am, please Yes. explain awards and activities once more. Sure, I'll Ma'am, go through awards it. and activities. Okay. We have few examples also, beta, so that will give you a clarity. तो पहले हम पूरा slide देख लेते हैं, अगर उसके बाद भी doubt होगा, then I will go ahead and explain that. Okay? So just give us few minutes. Let us move to the, ये slide में अभी चीजें जो दिख रही हैं, जितना समझाया उतना तो समझ में आया ना आप लोगों को? Yes, ma'am. Okay, I will clear each and every doubt, but we have few more examples. उससे तुम्हारे doubts clear हो जाएंगे, इसलिए just wait. Now, let us start with the first one, which is personal info. You all know very well. You have to write your name followed by your surname. If you have a maiden name or middle name, you have to write that. Then you have to mention your contact number and email address. यहाँ पर अब आप बोलोगे मैम एड्रेस क्यों लिखा हुआ है, एड्रेस तो आप हमको मना करते हो, तो बेटा अगेन इट इज ऑप्शनल। अगर कोई स्टूडेंट भले ही बी वाला है, बट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी ऑफ द गवर्नमेंट जॉब और बैंकिंग सेक्टर, उन सेक्टर्स में एड्रेस प्रेफर किया जाता है पर्सनल इन्फो में। जैसे कि प्रतिभा अग्रवाल, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी मैंने दे दिया अपना, और मैं अपना एड्रेस भी मेंशन करना पड़ेगा मुझे, जो भी मेरा एड्रेस है। तो इट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री एज वेल, तो कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट आईटी इंडस्ट्री, देन एड्रेस इज नॉट रिक्वायर्ड। वहां पर यू विल राइट योर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और अगर कोर टेक्निकल में जाना है तो गिटहब, लिंक्डइन, और जो तुम्हारा जो भी हैकर रैंक या जहां पे भी कुछ किया है ऐसे कंपटीशन में, उसका अगर कोई यूआरएल है, देन यू विल मेंशन दैट। एम आई क्लियर ऑन दिस पार्ट एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चीजें बेटा चेंज हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री, इसलिए कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना दिमाग में। और ऐसा नहीं है कि अगर कुछ चीज ऊपर नीचे हो जाएगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पर हाँ जो चीजें मैं बता रही हूँ कि होनी ही चाहिए, ये जरूर होनी चाहिए। अगर इसमें से एक भी मिसिंग होगा तो आपका रिज्यूमे कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है,
Now, personal info से आगे बढ़ते हैं. Objective. As I told all of you, objective is optional. Objective लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो. अगर objective लिख रहे हो, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हेडिंग नहीं डालते हैं कभी. सीधा आप अपना स्टेटमेंट लिखोगे, जैसे कि सीकिंग पोजीशन एज सॉफ्टवेयर डेवलपर इन योर स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन यूटिलाइज माय इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिकल नॉलेज. ठीक है, ये अगर तुमको क्लियर है कि टीसीएस आ रही है, सॉफ्टवेयर डेवलपर का ही पोजीशन निकला है उस दिन और तुमको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही जाना है, तो तुम अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियरली वहां पर मेंशन कर सकते हो. आ रही है बात समझ में आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. या सो और अगर ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो तो मेक श्योर अगर कॉपी पेस्ट कहीं से कर रहे हो तो भी ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में क्लैरिटी होना चाहिए, आपको डिस्क्राइब करते हुए आना चाहिए. जैसे एक बच्चे ने सवाल पूछा कि मैम इंटर्नशिप जरूरी है. इंटर्नशिप अगर किया है पर उसके बारे में कुछ आता नहीं है तो उस इंटर्नशिप का जैसे कोई मतलब नहीं है. ठीक उसी तरीके से अगर बहुत अच्छे शब्दों वाला है ना, अर्णब गोस्वामी टाइप वाली अंग्रेजी अगर चिपका भी दिया ऑब्जेक्टिव में पर उसको एक्सप्लेन करना नहीं आता तो उसका कोई मतलब नहीं होगा. So you can just keep it short and sweet and to the point. बहुत सिंपल लिखा है, देखो कुछ नहीं लिखा है ऐसा एक्स्ट्रा, बस लिखा है seeking position as software developer in your esteemed organization. तो that is not wrong. ठीक है, let us move ahead. Now, why career objective is important? या मिस करते हैं तो क्यों नहीं लिखना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए, ये आपको मैं बता देती हूँ. करियर ऑब्जेक्टिव जो होता है जैसे कि किसी मूवी का ट्रेलर होता है कि आप वो मूवी को पूरा देखोगे कि नहीं देखोगे, ठीक उसी तरीके से इफ यू हैव अ वेरी गुड बैलेंस्ड करियर ऑब्जेक्टिव दैट विल एक्ट एज अ पिच फॉर योरसेल्फ. ओके, इट विल एक्ट वेदर यू आर अ कैंडिडेट जिसकी तलाश वो एम्प्लॉयर कर रहा है. सो इट इज ऑल्सो रिटन ओवर हियर ऑन दिस स्लाइड दैट इट इज नॉट अ कंपल्शन, but the employers don't always go through the entire resume. So if you have a well written objective, you can leave a better impression. So yes, if you have a predefined very nice objective which you would like to mention on your resume, go ahead with the objective. But still if you are in a doubt, then just leave that career objective behind and just start with your educational qualification. Am I clear on this point, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, there are still few students who are trying to join the session. Okay, bacha log, if somebody is writing anything in chat box, I might not be able to see it right now. Okay, but I'll reply back afterwards. So career objective, now let us move ahead. सिविल इंजीनियर वाले बच्चों को लगता है कि हम बहुत लेफ्ट आउट है, हमको सीएसआईटी से कम समझा जाता है, तो बच्चा सबसे पहला एग्जांपल सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छा वाला ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए ये है कोई सिविल इंजीनियर यहाँ पर अभी सेशन में? Is there any student from civil branch today? No one? No one is from civil engineering? Oh, but then also I would like to showcase these are the few examples जो civil engineer के student ऑब्जेक्टिव में मेंशन कर सकते हैं कि टू बिकम एन एक्सीलेंट सिविल इंजीनियर टेकिंग अप चैलेंजिंग वर्क इन द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर. अब क्योंकि सिविल इंजीनियर्स वालों की अलग अलग चीजें होती है, जैसे कंप्यूटर साइंस आईटी वालों की सीए डीबीएमएस है ना, पाइथन जावा वगैरह वगैरह चीजें होती है, ठीक उसी तरीके से सिविल में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं. आपको जिस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है आप उस इंडस्ट्री को हाईलाइट कर सकते हो. जैसे यहाँ पर अगर किसी को कूलिंग टावर्स इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बिल्डिंग में बनाना है तो वो ये लिखेगा, किसी को हाईवेज में अपना करियर बनाना है तो हाईवेज को करियर ऑब्जेक्टिव में मेंशन करेगा. Because there are no more civil engineers, let us switch to the CSIT example. Now, who will read out this example for me? Any one of you from CS1, CS2? Ma'am, may I? Yes, please go ahead. Desirous of the position of tech engineer at XYZ Incorporated, where I can devote my excellent tech skills, analytical skills, and problem solving competences to promote the growth of the organization. Right. It may, thank you so much. It may seem to be a very elaborated, statement, but yes, if you feel, if you have that thing mentioned in your resume, if you have a good technical knowledge, exposure,
फ्रेशर के हिसाब से, ये नहीं कि 10 साल एक्सपीरियंस वालों से अपने आप को तुम कंपेयर करने लग जाओ. बट इफ अ कंपनी इज कमिंग टू हायर अ फ्रेशर and as a fresher you feel that you do have excellent technical skills, you have a good domain knowledge, you have made several projects, then you can go with these kind of elaborated statement as well. ये भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है, पर ये 2 लाइन में एडजस्ट हो जाता है. Am I clear on this point everyone? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. because we have less point, I will not give many of the examples. We will later cover all the examples. अभी हमारे बहुत सारे sessions होंगे, ज्यादातर सब resume, PI और JD पे होंगे, तो कुछ चीजें हम बचा लेते हैं. ठीक है, आज move करते हैं next slide पे. ये कुछ examples हैं. Okay, like a highly technical and knowledgeable software engineer seeking an entry level position, वगैरह वगैरह. Mechanical engineering का कोई student है आज session में? Please let me know, is there anyone from mechanical engineering today? There is no civil mechanical student. No one from batch B5. So I will skip this slide. Now, summary of the qualification. You all are aware about it because हम लोगों ने आपके साथ resume का format share किया था, right? So you will go with your current educational qualification first, which is your graduation, followed by your 12th and 10th. ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे, मैंने आप लोगों को बोला था कि आप अगर कॉलम वो ब्रैकेट में लिखते हो तो दैट इज ऑल्सो गुड, अगर आप लाइंस में लिखना चाहते हो सेंटेंसेस में, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. उसकी जगह इफ समबडी वुड लाइक टू गो अहेड और ग्रेजुएशन को ऐसे प्रेजेंट करना चाहता है तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, लाइक बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, परस्यूइंग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम SDBCT कॉलेज, लुकिंग फॉर एन एंट्री लेवल रोल, जो भी है वगैरह वगैरह, ऐसा भी करके हाईलाइट कर सकते हो. माइनर चेंजेस हमेशा तुम अपने हिसाब से अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो, इसमें कुछ गलत नहीं है. ठीक है, अकेडमिक डिटेल्स यू ऑल नो, कॉलेज का नाम आएगा, स्कूल का नाम आएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी से है, क्या परसेंटेजेस हैं, ये सारी चीजें आपको लिखना है. यू वोंट स्किप ऑन एनी ऑफ द पॉइंट. फॉर एन एग्जांपल, इफ यू स्कोर्ड ओनली 55% in 10th and you scored 80% in 12th, that doesn't mean that you will mention only 12th percentage and you will leave out 10th percentage. Don't do that. You have to mention all the CGPA, all the result of 10th, 12th and graduation. Am I clear on this point, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let us go ahead. Education, yes, you all know, most recent degree first, and you always have to spell out the name of your college and university. That means अगर sentence में भी लिख रहे हो, ठीक है, मैंने तुम लोग को ब्रैकेट में बताया था, अगर sentence में लिखोगे तो भी ऐसा लिखोगे, pursuing CS, BTech जो भी थर्ड ईयर वगैरह है, फ्रॉम SDBCT जो भी कॉलेज है उसका पूरा, RGVP पूरा लिखना रहेगा आपको. What chat I am getting here? Ma'am, Amy and C have class. Okay, okay, ma'am, Kitur, ma'am, thank you. So now let us move to the next slide. Technical skills, projects, trainings, internship certification. This is the very important slide and thing which you all have to keep in mind because you are now in 7th semester. You have only 2 or 3 months more. Okay, if you would like to add up more to your resume. Now, you have to prioritize the order in which you did internship. क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट चल रहा है तो इंटर्नशिप भी जो 2021 में किया है वो पहले आएगा, 2020 में अगर कोई चीज की थी तो वो बाद में आएगी. हमें हर जगह पर इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, वेदर इट इज योर अचीवमेंट और अकम्प्लिशमेंट, वेदर इट इज अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वेदर इट इज अबाउट योर प्रोजेक्ट्स और ट्रेनिंग्स. जिस भी डेट में जैसे हम चल रहे हैं, जो चीजें रिसेंट की हैं वो पहले आएंगी, फॉलोड बाय द ओल्डेस्ट वन. Am I clear on this point, everyone? Yes, no? Yes, ma'am. Anybody? Yeah. कोई बीच में बोलो, नहीं तो ऐसा लगेगा मुझे इतनी आत्माओं को पढ़ा रही हूँ मैं. Now, so talking about the work experience, यहाँ पर work experience आप बोलोगे मैम हम तो फ्रेशर है, तो बच्चा यहाँ पर work experience का मतलब है कि apart from college जो तुम्हारे करिकुलम में चीजें हैं कि माइनर प्रोजेक्ट बनाना है, मेजर प्रोजेक्ट बनाना है, पर इसके अलावा भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, मॉक इंटरव्यूज जब मैंने लिया था CS3 IT, आई नो देयर आर मेनी स्टूडेंट हु आर डूइंग थिंग्स अपार्ट फ्रॉम व्हाट कॉलेज इज आस्किंग यू टू डू. मेनी ऑफ यू हैव मेड योर ओन प्रोजेक्ट्स और यू आर वर्किंग on few of the free websites where you are making projects and delivering it to clients. So if anybody of you have those kind of experiences, go ahead and mention those experiences on your resume. It will again provide you an edge.
Am I clear on this point, everyone? Yes, ma'am. Yes, Let us ma'am. move ahead. So technical skill is the very important part in your entire resume. For an example, if you are applying for a software industry, then you have to make sure that you have a considerable amount of knowledge about the subject which you have studied in your BE or BTech. For an example, C++, Java, DBMS, Unix, जो भी होते हैं तुम लोगों के और सारा technical subjects, मुझसे ज्यादा तुम लोगों को इस बारे में पता है, आई एम नॉट फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, पर कहने का छोटा सा मतलब ये है कि जो भी सब्जेक्ट कम से कम पढ़ते हो उसके बारे में तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए. अदरवाइज पीआई में जब सवाल पूछे जाते हैं तो तुम लोग बेसिक नहीं बता पाते हो कि C++ में डिफरेंस क्या है, ये भी कुछ बच्चे नहीं बता पाते हैं. तो ये चीजें तुम्हारे क्लियर होने चाहिए. नाउ कंप्यूटर साइंस ब्रांच स्टूडेंट शुड बी गुड एट ऑल द प्रोग्रामिंग languages, OS, networking, etc., which you have read in your engineering. Okay, now let us move ahead. स्किल्स मतलब पर्सनल एट्रीब्यूट्स अब आपको मेंशन करनी है, तो उसमें आप ये नहीं लिखोगे कि ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, उसमें वो सॉफ्ट स्किल लिखोगे जो आज के इंडस्ट्री की डिमांड है. फॉर एन एग्जांपल, यू शुड बी केपेबल इनफ टू वर्क इन अ टीम, यू शुड बी प्रोएक्टिव, you should possess analytical skill, problem solving skill, and if you have any of the computer skill, it will be like cherry on a cake. For an example, एक्सेल पे काम करना आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे अच्छे से काम करना आता है, तो ये चीजें और ज्यादा आपके कैंडिडेचर को स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एमएस एक्सेल वर्ड पे भी काम करता है ना. तो इन चीजों के बारे में इफ यू नो, इट इज गुड. Awards and activities, you asked what kind of awards and activities we need to include. तो बच्चा make sure कि वो awards और activities include करने की कोशिश करो जो उस profile से related है. For an example, if you are a part of any of the committees, for an example, अगर अपने college में कोई अलग अलग committees बनी हुई हैं या कोई cell है, या तुम लोगों ने सारे लोगों ने, मैंने जब तुम्हारा resume check किया था, तुम लोगों ने IIT बॉम्बे का कुछ mention किया हुआ था, certification में था शायद वो. पर अगर ऐसी किसी भी जगह के कम्युनिटी के मेंबर हो, हैकर रैंक है ना, कोडविटा, जो भी चीजें होती हैं, तुम्हारी टेक्निकल अगर कोई सोसाइटी है अपार्ट फ्रॉम योर कॉलेज, तो उन चीजों को हमेशा हम अवार्ड्स या एक्टिविटीज में मेंशन कर सकते हैं. जैसे कि अपार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट टीम, या फिर जो स्टूडेंट होते हैं, उस तरीके से अगर कहीं पे भी कुछ कंट्रीब्यूट करते हो तो वो चीजें यहाँ पर हाईलाइट की जा सकती हैं. Am I clear on this point, everyone? Yes, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ज्यादा डिटेल में बेटा हम लोगों के और सेशंस होंगे तब डिस्क्राइब करूंगी, ठीक है. अभी ये बस एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर आप लोग को बता रहे हैं आज. वॉलंटियर एक्सपीरियंस में मोस्ट ऑफ यू, व्हाइल आई वाज टेकिंग योर पीआई, यू सेड दैट यू आर, हुमेरा जैसे एक बच्ची है, वो बहुत ज्यादा एनजीओ और सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है. तो बच्चे चाहें तो वॉलंटियर एक्सपीरियंस को भी, अगर जगह बचती है सब कुछ लिखने के बाद, टेक्निकल जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, फिर भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस अगर जा रहा है, व्हाइट स्पेस जा रहा है रिज्यूमे में, उस टाइम पे यू कैन गो अहेड एंड मेंशन अबाउट योर वॉलंटियर एक्सपीरियंस एज वेल. दिस इज ऑप्शनल, बट यस, अगर आप कोई एनजीओ या किसी चीज में काम किया है तो यू कैन गो अहेड विद इट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रेनाउंड कंपनीज, आईटी कंपनी डू हैव देयर these kind of CSR एक्टिविटीज, वो लोग भी करवाते हैं. TCS, इन्फी, जो भी IBM, जिसका नाम लो, सबके अपने CSR एक्टिविटीज चलते हैं, है ना. नीता अंबानी कितने एक्टिविटीज और ये सारी चीजें करती हैं, तो आप लोग चाहो तो मेंशन कर सकते हो, बट इट इज ऑप्शनल. ऐसा नहीं कि प्रतिभा मैम ने बोला तो अब हम चले रॉबिनहुड सोसाइटी के बन जाए मेंबर, ऐसा नहीं है. हॉबीज एंड इंटरेस्ट, ज्यादातर मैं बोलती हूँ कि नहीं लिखना है, पर इट इज ऑप्शनल. अगर किसी एक बच्चे के पास सर्टिफिकेशन वगैरह उतने ज्यादा नहीं है, टेक्निकल स्किल्स में कुछ ज्यादा चीजें नहीं की हैं, यू कैन गो अहेड विद योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट. इफ यू विश यू कैन मेंशन इट इन योर रेज्यूमे, पर उसमें ऐसी हॉबीज होनी चाहिए जो आपके स्किल को डिकोड करता हो जॉब के हिसाब से. फॉर एन एग्जाम्पल, रेलेवेंट हॉबीज होनी चाहिए, ठीक है. तो ऐसा नहीं कि नाचना गाना तुम्हारी हॉबी है. हाँ, अगर तुमको कोडिंग में इंटरेस्ट है, या अगर तुम टेक्निकल किसी पेपर के लिए लिखते हो, कुछ भी अगर ऐसी चीजें हैं, तो उसको हॉबीज या इंटरेस्ट में मेंशन करना ज्यादा रेलेवेंट होता है. मूविंग अहेड, पर्सनल इन्फो, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैंने इसीलिए अब इसको ऑप्शनल लिख दिया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में अगर बात करो तो इस चीज को नहीं लिखोगे तो भी चलता है. लैंग्वेजेस नोन एंड एड्रेस शुड बी देयर. फाइनल इज सेल्फ डिक्लेरेशन, जहां पर आपको डिक्लेयर करना होता है, ये कुछ सैंपल हैं, दैट आई जेन्युइनली है ना, डिक्लेयर दैट ऑल द फैक्ट्स मेंशन्ड इन माय रिज्यूमे इज ट्रू टू माय फेथ
and I am answerable for its accuracy. इसका मतलब अगर 55% आया था तो उसको 56 भी नहीं बनाना है. If you scored 55%, you don't have to write it 56%, या 59 आया तो उसको 60 बना के नहीं लिखोगे. और अगर ऐसा कर दिया और सेल्फ डिक्लेरेशन में भी लिख दिया कि सारी चीजें करेक्ट हैं, then you will be blacklisted from that company. I have seen 2 students in my previous career 2014 जिनका TCS में सिलेक्शन हुआ था और उनको 3 महीने के बाद ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, क्योंकि जब आप एक बार कंपनी का हिस्सा बनते हो उसके बाद फिर से आपका बैकग्राउंड चेक होता है. तो ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा. थोड़े टाइम के अच्छाई के लिए पूरा करियर खराब हो जाता है, पूरा इंप्रेशन खराब हो जाता है. तो अगर 59 आया है तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट इट and just mention it in your resume. Okay.